there is a lot of laws against farmer, especially Wildlife Act. Then PMP Pipeline Act 1962. The laws burdening farmers too much. In Wildlife Act, we are not against for that Wildlife Act, but the wild element should want to stay in wild. Once it's come to Pata land, it's damaging our crops, our properties. But the case is filling against the farmers. So we need a main corrections on that Wildlife Act. आने से क्या होता है, खेती के अंदर चला जाता है, पूरा नुकसान कर देता है. नुकसान करने के बाद क्या होता है, पैसा तो मिलता नहीं किसान को, पैसा भी नहीं मिलता है और किसान के ऊपर एक्ट भी लगाता है. कोई हाथी मर गया, कोई सुअर मर गया, तो किसान मार दिया बोलकर बताता है. नमस्ते. दक्षिण भारत की खबरें हिंदी पट्टी तक पहुंच नहीं पाती, या ये कहे हमारे जैसे हिंदी पट्टी के पत्रकारों का उनमें इतनी दिलचस्पी नहीं होती. दक्षिण भारत से ही तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 15,000 से 1,500 लोग दिल्ली आए हैं. वे सब किसान हैं और अपनी समस्याएं बताने, केंद्र सरकार को अपनी समस्याएं बताने आए हैं एक अनूठे अंदाज में. आपने क्लिप्स में ये देखा होगा किस तरीके से उन्होंने नृत्य करके अपना विरोध केंद्र सरकार के सामने जाहिर किया है. मेरे साथ कुछ लोग हैं जो इसी समस्या को, अपनी सारी समस्याओं को बताना चाहते हैं. नमस्कार सर, आपका नाम? Karthik, Youth Wing Leader, Farmers Union, non-political, non-communal, from Tamil Nadu. Okay. So, sir, what are your demands for today? Sir, our demands, there is a lot of laws against farmer, especially Wildlife Act. Then PMP Pipeline Act 1962. The laws burdening farmers too much. In Wildlife Act, we are not against for that Wildlife Act, but the wild element should want to stay in wild. Once it's come to Pata land, it's damaging our crops, our properties. But the case is filling against the farmers. So we need a main corrections on that Wildlife Act. Second thing, mainly the wild boar. It's damaging 70 to 80% of crops, all kind of crops. So we needed a shooting order for that wild boar. That is the only solution that you can make it in Hindi, right? No, you are explaining in English, and then after that I'll. Second thing, that PMP Act 1962, that acts giving all permission for corporate companies, the laying big pipelines, natural gas, GAIL, Telegraph Act. So all our Pata land get wasted. It's become zero value, 0% value. So our Farmers Union is not against that laws, but we need a scientific corrections. But this all laws made. क्या correction होने चाहिए? In Wildlife Act, once the wild animals enter into Pata land, there are no cases made about farmers, right? Once the wildlife in wild region, no issues. But when the wildlife enter into our Pata land, the case against the farmer. So this thing should be avoided. Okay. Then for wild boar, there is no solution for avoid that. So we want to change a law for shooting wild boar because of damaging lot of crops, all kind of crops. Okay. So what are you asking for the PMP gas line? Yes, in PMP pipeline gas line, there is a 1 point ROU. ROU means right of user. That means once a pipeline lay into the ground, the land belongs to us, but that particular part belongs to the corporate companies. So that it will be 6 feet. So that is a very against for farmers. So that should be want to change. What is the ROU? So what is the compensation that government is giving to you? Oh, there is no compensation for Telegraph Act. For this in PMP Pipeline Act, now the changes is there. They are giving a market value, but we need an open market value compensation. There is a huge difference between open market compensation and guideline value. So what is the difference? If for example that open market, it's 10 lakhs per acre,
The guideline value is 12,000 or 15,000. More than 15,000. So 15,000. is this a recurring rent or one time? No, once, only one time. Puri, for the whole project? Whole project, that's only one time. There is no recurring compensation in farmers in any department. So a farmer can use this land, still use this land, right? No, they can use this land, but they only cultivate only special crops, Like? not long-rooted crops. They only cultivate groundnut like that. Only few crops. Like which crops? Example like groundnut, short-rooted crops, Okay. not long-rooted crops. So what is the major, which are the major crops are grown in the Coimbatore area? Yes, it's South India. It's only it's called a coconut city. Coimbatore called as a coconut city. So the coconut is a major crop for Coimbatore, Pollachi surrounding district. So in this PMP Act, that ROU not allowed to grow a coconut trees, not coconut trees, mango trees, anything else, because they are all are perennial, long-rooted crops. So these are all are things worried for us. So basically the land is not going to be useful for you anymore. Yeah, half of the land not useful for anymore. Either half, if we should want to grow only specific crops, they recommend from the department. Okay, so before the camera on, we were talking about the MSP you're talking about, right? So what is the MSP issue there? Yes, see, especially in Coimbatore, Pollachi, the farmers only surveying with coconuts. So last year coconuts sell for one piece 20 rupees. Now it's 5 rupees. 5 rupees. So see the huge difference. Okay, so that's we are asking. We need a MSP for coconut. Even they fixed the price for 1 kg of cocora, not one, but still it's not enough. We need up to 150 per kg copra. This is a whole Tamil Nadu farmers grievance. Okay. Because whole Tamil Nadu, Kerala or Karnataka are surviving with only with coconut trees, not any other vegetables or anything else. They only belongs to with coconut farmers. Okay. So what do you want? What should be the compensation according to you? Yeah, second thing, yes, for MSP I have one more wish. Before 2 years, all you know, the onion prices. Now it's 3 rupees per kg. Just 3 rupees per kg. So This is what the farmer is getting. yes, just 3 rupees per kg. Right now. So the MSP should want to applicable for all crops. It's not only coconut, for onion, coconut and vegetables, rice. So this is the main thing we want, that MSP should be implement as soon as possible. Okay. So There is a huge difference. When the consumer getting onion for 20 rupees, that farmer is getting 3 rupees. So as soon as possible, we should want to clear the difference. It's cannot possible by farmers. It's only done by a government. okay. So in the yeah sure Sugarcane non-payment payment of 5 years. Sugarcane not payment of past 5 years. Huge. In Tamil Nadu, there is one more tragedy happens. For last 5 years, there is no coconut payment given for farmer. All coconut companies get a loan from farmer's name. They have no written single paisa payment. So that also main point on that. Okay. So what should be the changes in the PMP Act? Yes. PMP Act, there is one section called ROU, right of user. That part we should want to take away. Okay. Right of user. What is this about? Right, because the company laying one pipeline, they have a full rights on that pathway. Either both side of land belongs to farmer, but that specific part of land belongs to that corporate companies. Okay. So basically, if you want to sell that land, you can't sell it. Definitely not. It's a 0% value. Okay. Second thing, in that right of user, there is one more thing is there. Something happened in that pipeline, accidents. The burden of proof belongs to farmer. See, one That complaint. farmer has done nothing wrong, right? That farmer should want to prove he has done nothing wrong. Okay. That's a very worst thing in that law. So that ROU should want to remove from PMP Act. Okay.
Okay. Sugar Uh, mill, sugar mill. it's been taken. Okay. So last question is this: कि what should be the compensation according to you? Should be the compensation provided to the farmer? Yes, that's a good question. See, not like other farmers association. Our association is not against for developing schemes. Okay, so we need a develop schemes. Then only the country should be developed. So in that time, one scheme is coming, they want to go with good compensation, with open market compensation. With that will be okay for farmers. If a farmer is losing 1 acre in that any of developing scheme, that should man get an open market. Whatever the open market rate, he should want to get that. That's a original compensation for farmers. So basically, you want to say this: कि if the government is using your land, they should buy your land. Yeah, that's yes. Now, right for airport acquisition, the Coimbatore airport is coming for international airport. So they buy the land with good compensation. So there is no issues at all. 400 acres they get from farmers. They buy land from farmers. So there is no issues. They acquiring the land. That is no issues. But in that ROU, they just enjoying the land. That's the issue in PMP Act. Okay. That's the matter. Okay. Thank you so much, Karthik. And sugar mill, they're not giving the payments. Okay. Past 5 years. You want to mention that? No, yeah, let him mention. Mention money. Mention money. 5 years they are not giving the compensation. I'll But what already- they're doing is, I'll- they for sugar mills, past 5 years they are not in Tamil Nadu. Past 5 years they are not giving. Especially in Tamil Nadu, the Aryanana sugar mill, Kothari sugar mill, they are not giving. They're giving only, suppose sugarcane is, they're cutting for 2,500 rupees per ton, means they give only 1,000 rupees. They give balance, they say they'll give it for after 6 months, 6 months. This is, goes on for 5 years. Now, for me itself, they have to give me more than 1 crore. You For me, okay. I have cultivated an sugarcane in Tanjavur. For me itself, they have to give more than 1 crore. Okay. Still, they are not giving. ओके तो यही बातें हम आपको हिंदी में भी समझाएंगे। एक और हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो आपको सब सारे ये जो इश्यूज़ हैं वो आपको हिंदी में समझाने को राजी हैं। तो जो भी बातें हमने कार्तिक से सुनी, तो क्या क्या समस्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, और आप आज दिल्ली में इतने बड़े प्रदर्शन में क्यों आए? हमने रिक्वेस्ट करने के लिए आया हुआ है। पेट्रोलिंग को बताया था ना, पेट्रोलिंग एंड मिनरल एक्ट, पाइपलाइन अगेंस्ट फॉर द फार्मर्स बताया था ना 1962। उनका अनुसार तो मतलब अभी नहीं किया, तो ऐसा डालने से तो वैल्यूएशन बहुत कम हो जाता है। एक दूसरा तो फॉरेस्ट एनिमल्स मतलब जंगल वाला एनिमल्स आता है ना, हाथी हो सुअर हो आता है ना, हाथी सुअर आने से क्या होता है, खेती के अंदर चला जाता है, पूरा नुकसान कर देता है। नुकसान करने के बाद क्या होता है, पैसा तो मिलता नहीं किसान को, पैसा भी नहीं मिलता है, और किसान के ऊपर एक्ट भी लगाता है। कोई हाथी मर गया, कोई सुअर मर गया, तो किसान मार दिया बोलकर बताता है। तो मतलब हाथी जो जानवर वगैरह आता है उनका वगैरह फॉरेस्ट थोड़ा कंट्रोल करना। कोई भी जंगली जानवर मर जाए तो वो उसका इल्जाम किसान पे लगाते हैं। किसान पर लगाता है। ओके। हाँ, और दूसरा है ये कोकोनट के बारे में बताया था, नारियल के बारे में। इधर दिल्ली में अभी मैं पूछा था, एक नारियल 60 रुपया, तो उधर क्या होता है, एक नारियल 9 रुपया। अच्छा। मैं एक नारियल का दरगत रखा है, मैं भी मतलब 200-300 तक रखा है, 9 रुपया का मांग रहा है, इधर तो 60 रुपया बिक रहा है। यला नहीं बोलता है, नारियल पानी इधर 60 रुपया, उधर तो 20 रुपया। अच्छा। हाँ, तो किसान तो ऐसा तो गड्ढे में चला गया, तो गवर्नमेंट देखती है। हाई दाम मिल रहा है सर। इधर तो दाम हमको बहुत कम मिलता है। जी जी। इधर तो मतलब बाजार मार्केट में तो ज़्यादा मिलता है। फिर किसान के क्या, कोई तो ये तो यही नहीं, किसान का कोई प्रॉफिट नहीं है। किसान को कूली लगाकर, कूली या तो आजकल 300 रुपया हो जाता है, फिर उनको भी देना पड़ता है। 300 रुपये अगर मतलब यो किसान पूरा कमाई करने पर आखिरी में देखने से कुछ भी नहीं मिलता है। किसान अपना यो परिवार चलना में ही मुश्किल हो जाता है। इतना तक आज तक किसान का गिरावट हो गया। दूसरा क्या हो गया, SC/ST का तो भैया ने बताया, उसके बारे में मेरा क्लियर पता नहीं। ये दो तीन पॉइंट है। आप कार्तिक मिल्क दूध है ना, दूध तो इधर तो बाजार में कितने मिलते हैं, आप बताइए कितने मिलते हैं? 55 रुपये किलो। 55 रुपया किलो। उधर तो मतलब 29 रुपया या 30 रुपया या 28 रुपया, 28, 27, 29, 30 तक ही मिलता है, किसान को देता है। ये गौपालक को मिल रहा है। नहीं, 1 लीटर को
1 लीटर मिलता है। जी जी। अगर एक पशु के लिए एक दिन के लिए कम से कम 200 रुपया या 250 रुपया उसको देना पड़ता है, जो खाना के लिए वगैरह चारे में। देना पड़ता है। वो जो दूध देता है, मान लो 10 लीटर दूध देता है, 10 लीटर दूध देने से कितना हो जाता है, 260 रुपया हो जाता है, या 70 रुपया हो जाता है, या 300 रुपया हो जाता है। बाकी तो फिर वो खाने के लिए बराबर हो जाता है। आई तो दूध वाला किसान भी चला गया, नारियल वाला कोकोनट, नारियल मतलब कोयम्बटूर, पोल्लाची एंड किणतकड़व, ये 3 एरिया में कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में नारियल बहुत है। लेकिन नारियल की वजह से किसान कुछ साल तक जी रहा था। अभी नारियल को गिरावट हो गया, पैसा बहुत गिरावट हो गया। उसके लिए गवर्नमेंट कुछ न कुछ करना चाहिए, ऐसे मांगा। ओके, तो पीएमपी एक्ट में कार्तिक बता रहे थे कि किसान अपनी जो फसल में भी चेंजेस करने पड़ेंगे किसानों को, तो वो क्या चेंजेस हैं? फसल में तो अभी पीएमपी एक्ट में तो पाइपलाइन है ना, पाइपलाइन डालते वक्त अगर देखो ये एक जमीन मान लो, इस जमीन में इस लाइन में पाइपलाइन जा रहा है, इधर भी जा रहा है, अभी बीच में भी जा रहा, तो कैसे फसल लगाएगा? नेक्स्ट फसल नहीं लगा सकता है। अगर ट्रैक्टर आने से मतलब फास्ट वाला रुकाता है, उसको नहीं करना, रुको बोलकर बोलता है। तो नारियल को बताता मैं, नारियल को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोबरा बोलता है ना, कोबरा, वो नारियल का अंदर वाला का मतलब सुखने की बात नहीं होता, कोबरा, उसको गवर्नमेंट परचेस करना चाहिए। तो 1 केजी को ये पिछले साल तो 130 रुपया दिया था, अभी इस साल तो क्या 100 रुपया, 102 रुपया कर रहा है। वो सभी को ये नहीं होता है। तो लोकल मार्केट में क्या होता है 80 रुपया, 79, इसलिए मतलब बहुत गिरावट हो जाता है। 79, 80 इसी यही मिलता है। लेकिन ये गवर्नमेंट बोलता था वो पहले प्राइस हमको नहीं मिलता है, इसको बराबर करना चाहिए गवर्नमेंट। जो नारियल का ना, सूखा हुआ नारियल को गवर्नमेंट ले रहा है, जो कच्चा नारियल ना उसको गवर्नमेंट लेने से गवर्नमेंट किसान का अच्छा लगता है। हाँ, क्या उसको एक प्राइस डालना चाहिए। तो कच्चा नारियल है, नारियल तोड़ने के बाद में उसको क्या 22-23 केजी देता है, 2 नारियल डालने से 22 से 23 रुपये होता है। इसको हम बराबर मांगता हूँ। पिछले साल कैसे दिया उसी मुताबिक मांगता हूँ। पिछले साल तो 35 रुपया तक चला था, 33, 34, 35 या 31, 32 ये मिला था। वो हमको बराबर मिलना से कम 31-32 मिलना चाहिए। अभी 26, 27 मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 27 या 26 मिल रहा है। हमको मिलना चाहिए 32-33 तक। मिलने से थोड़ा कुछ किसान आगे बढ़ सकता है, नहीं तो किसान तो बिल्कुल ही नीचे ही जाएगा। क्योंकि मतलब वो कोयम्बटूर में पोल्लाची, किणतकड़व, कोयम्बटूर पूरा नारियल की ही वजह से मतलब वो खेती चल रहा है। नहीं तो किसान को कोई इनकम नहीं है, नारियल या दूध, बाकी कुछ नहीं। बारिश इतने ज़्यादा नहीं, इधर तक बारिश ज़्यादा नहीं, इसलिए नारियल या दूध यही चल रहा है। ये मिनिमम प्राइस हमको मिलना चाहिए बस। टीवी की मीडिया किसानों को जब आंदोलन वे करते हैं, उन्हें खालिस्तानी बताती है, उन्हें आतंकवादी बताती है। किसानों की समस्या पूरे देश में समान है। आपने अभी सुना, एमएसपी की समस्या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समान है। हमारे साथ चारों ओर इस वक्त सुरक्षा बल के लोग खड़े हैं। ये सभी उन परिवारों से आते हैं जो कभी ना कभी खेती से जुड़े रहे हैं। अगर किसान इस देश का सुखी नहीं रहेगा, इस देश की सेहत सुखी नहीं रहेगी, ये देश कभी सुखी नहीं रह सकता। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।